Hello everyone. In this video, today I am going to discuss figure of speech based on sound, which is going to be onomatopoeia, pun and alliteration. So first I will take onomatopoeia. This is the use of words that phonetically imitate a natural or mechanical sound and thereby convey meaning through sound effects. The words like tinkle, buzz, hiss, jiggle, thud, sneeze, snore, etc. are known as onomatopoeia. ओनोमेटोपोइया मीन्स जब हम किसी साउंड का यूज किसी पोइट्री या किसी सेंटेंस में करते हैं, मतलब किसी साउंड का एक साउंड को हम सुनते हैं तो वहां पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है. फॉर एग्जांपल, and the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came tumbling. तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है, muttering, grumbling, rumbling, rumbling, tumbling, इन सारे वर्ड्स से हमें एक म्यूजिक क्रिएट हो रहा है. ठीक है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ साउंड समझ में आ रहा है, तो इन सारे वर्ड्स में ओनोमेटोपोइया है. Next, the murmurous haunt of flies on summer eves. So murmurous is the example of onomatopoeia. And drowsy tinklings lull of distant folds. So here tinklings is the example of onomatopoeia. The swallow twittering from the straw-built shed. So twittering here is the example of onomatopoeia. Next is pun. A pun is a humorous play on words. पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, जब इसको हम यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि वर्ड्स से खेला जा रहा है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन एनी सेंटेंस. So in this figure of speech, two words having the same sounds and some spellings are used, but they generate two different meanings. Like, Deepak cannot read 2 pages from a book, but has 2 pages. Here pages means book of the pages and another pages means the servants. Okay, Deepak cannot read 2 pages from a book but has 2 pages. Next example is, he is a musician but his knowledge about sound is not sound. ठीक है, अभी आपको क्लियर है कि पन का यूज हम कैसे सेंटेंस में कर रहे हैं. A leopard changes its spot because it goes from one spot to another. Okay. Next is alliteration. Alliteration is the repetition of initial consonant sounds in the stressed syllables of successive or nearly successive words. For example, with beaded bubbles twinkling at the brim. जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड का यूज रिपीटेडली किसी लाइन में बार बार मिले तो वहां पर एलिटरेशन का यूज होता है, या फिर एलिटरेशन को हम कॉन्सोनेंस भी कह सकते हैं, कॉन्सोनेंस का यूज होता है. ठीक है, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू. Next, thou still unravished bride of whiteness, thou foster child of silence and slow time. यहाँ पर एसोनेंस का यूज हुआ है, एलिटरेशन, कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस. एलिटरेशन एक कॉमन टर्म है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स का, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स का, बट कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस में डिफरेंस है. कॉन्सोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंस में जब सक्सेसिव वर्ड्स, मतलब जो है रेपिटेशन इनिशियल कॉन्सोनेंट का होता है, जैसे बी, बीडेड, बबल्स, ब्रिम, ये क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है. इसका अगर यूज हो रहा है तो वहां पर कॉन्सोनेंस होगा. और जैसे स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ व्हाइटनेस, या आई 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 या ई ई ई साउंड का यूज हो रहा है तो यहाँ पर एसोनेंस, यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है. ठीक है, अगर वॉवेल का रेपिटेशन आ रहा है तो एसोनेंस होगा, अगर कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन आ रहा है तो कॉन्सोनेंस होगा. बट एलिटरेशन इज अ कॉमन टर्म फॉर बोथ द वर्ड्स. लाइक पफ्स, पाउडर, पैचेस, बाइबल्स, बिलर, डाउक्स. यहाँ पर पी 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 ब का यूज हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉन्सोनेंस होगा या फिर एलिटरेशन हम कह सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक यू.